अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ 3 है आज का मैच। पहला मैच है आपके सामने। आपके प्यारे दोस्त, आपको बताता चलूँ, बेस्ट ऑफ 3 है पहला मैच। एक्स फाटे वर्सेस डेड मशीन्स। आपको बताता चलूँ कि कल इनका मैच था मगर पोस्टपोन हो चुका है, तो बेस्ट ऑफ 3 है अभी। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि नेक्स्ट मैच 8:30 बजे है। नहीं सॉरी, 9:30 बजे। बेस्ट ऑफ 5 पोर्टल ई स्पोर्ट वर्सेस ESM विजन 7। और फिर बाद में आपके सामने पेश किया जाएगा लास्ट मैच बेस्ट ऑफ 5 का 10:30 बजे। समुराई इन स्पेस वर्सेस E4। सो हमारे साथ रहें, आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। और हाय लूसीड, हाय कॉम्फिन। टुडे मैच इज बेस्ट ऑफ 3 एक्स फेट वर्सेस डेथ मशीन। ये क्या है? इनवाइट टू व्यू।
यार सॉरी यार, लाइट का इशू था यहाँ पे। Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said all night. Yeah, let's go. Look. I told Shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD. JPB. You already know, baby. Yeah. I said, I already done it. Everything you wanna do, I already. You know that yeah. I said, you know that yeah. Damn, it's gonna be a long night. Oh. कर दो स्टार्ट गाइस।
गाइस सर्च एंड डिस्ट्रॉय स्टार्ट हो चुका है। XF वर्सेस DM, बहुत अच्छी गेम है आज के लिए। 2 स्नाइपर्स हैं, 3 स्नाइपर्स, शैडो, साहिल, डिसॉल्वर। देखते हैं। Contact with enemy. डाउन हो चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त डिसॉल्वर की तरफ से। 2 प्लेयर्स और हैं उनके पास, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पे डाउन हो चुके हैं DM के सारे प्लेयर्स। Defend the objectives. They have the bomb. Grenade. Frag out. ओहो लकी। स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर। एक स्नाइपर डाउन हो चुका है। शैडो ने बहुत ज़बरदस्त शॉट लिया, दूसरा शॉट, और यहाँ पे डाउन हो चुके। शैडो ने बहुत प्यारी गेम खेली है इधर, The enemy has the bomb. It's all up to you now. और Finish the mission. ज़बरदस्त हेड। Nice work. Get ready for the next round. दूसरा पॉइंट ले चुके हैं XF वाले। Defend the objective. They have the bomb. Grenade out. Frag out. एक डाउन हो चुका है। I got shot. Targets in sight. 2 प्लेयर रह चुके हैं। Last one. आखिरी प्लेयर रह चुके हैं, और यहाँ पे DM की पूरी टीम आउट हो चुकी है। Get ready for the next 3 round. पॉइंट्स मिल चुके हैं XF को। बहुत प्यारी गेम। Defend the objectives. 2 The स्नाइपर्स enemy हैं has the bomb. Frag out. XF में। देखते हैं। ओहो हो बहुत जल्दी बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। डिसॉल्वर बहुत आराम से बचे। Enemy in sight. Last man standing. आखिरी Finish it. प्लेयर रह चुका है, और यहाँ पे फेदिस ने डाउन कर दिया। Get ready for the next बहुत round. जल्दी गेम खेल रहे हैं XF वाले, और बहुत ही प्यारी गेम। शैडो फिर वापस आ गए हैं स्नाइपर पे। Defend the objective. They have the bomb. Frag out. बहुत ज़बरदस्त। Last one. Complete एक the प्लेयर mission. रह चुका The है, enemy has the bomb. और यहाँ पे XF के एक Nice प्लेयर ने work. डाउन कर दिया Get ready सब। for the next round. आखिरी पॉइंट रह चुका है। देखते हैं कैसे खेलते हैं DM वाले। Destroy the objective. मेरा ख्याल है वो दूसरी पोजीशन लेने वाले हैं। Grenade out. I got shot. डाउन हो चुके हैं। I'm down. It's all up to you now. Finish the mission. DM शैडो अकेले रह चुके हैं, और यहाँ विक्ट्री हो चुकी है XF को।
बहुत प्यारी गेम एक्सएफ की तरफ से, बहुत प्यारी गेम खेल रहे हैं बहुत जल्दी। ओके नेक्स्ट मैच डोमिनेशन है। अगर एक्सएफ जीत जाती है ये मैच तो हम सेकंड मैच दिखाएंगे पोर्टल ई स्पोर्ट वर्सेस ESM विशियस 7 एट 9:30 PM पाकिस्तानी टाइम। बेस्ट ऑफ 5 है, बहुत अच्छी गेम होगी, बहुत ज़बरदस्त। 9:30 PM पाकिस्तानी टाइम पे पोर्टल ई स्पोर्ट्स वर्सेस ESM। नेक्स्ट मैच इसके बाद है डोमिनेशन अगर जीत जाती है एक्सएफ। स्कोर स्ट्रीक बदल लो यार। बेस्ट ऑफ 3। चल पे मेरा तो हो गया। हो गया मेरा भी रेडी। डीएम वाले रेडी हो चुके हैं, एक्सएफ का एक प्लेयर रेडी नहीं है, देखते हैं। बहुत अच्छी खेली है, डीएम के पास अभी भी चांस है रिटर्न होने का। बहुत प्यारी गेम खेल रहे थे पिछले सारे मैचेस में। डोमिनेशन है, अभी देखते हैं क्या करते हैं डीएम। 75 round score and time limit 450 and kick Sahil. Bro, kick Sahil. साहिल को निकालने की कोशिश कर रहे हैं शायद। ओके इधर सब रेडी हैं। डोमिनेशन है 75 की लिमिट का। डोमिनेशन स्टार्ट हो चुका है स्टैंड ऑफ का। एक्सएफ वर्सेस डीएम। डीएम के पास आखिरी चांस है ये मैच विन करने का। ओके गाइस, डीएम वर्सेस एक्सएफ। डीएम बहुत जल्दी से सी और बी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बी भी लेंगे मगर डीएम भी पीछे नहीं रहेगी। बहुत ज़बरदस्त डेथ मशीन रिकवर कर रहे हैं बी को। मेरा ख्याल है कि बी नहीं लेने देंगे वो लोग, बी आराम से लेंगे मेरा ख्याल है। एक्सएफ डिफेंस पे खेल रही है, मेरा ख्याल एक्सएफ ले रही है, बी ले रही है।
एक्सएफ टोटली बी पे कंट्रोल कर रही है। चार्ली भी जाने वाला है, मेरा ख्याल है डीएम कॉर्नर पे आ जाएगी। रेड मशीन कॉर्नर पे ले गए थे वो लोग। बहुत प्यारी गेम। सी वापस ले लिया गया। ये वापस बी की तरफ जा रहे हैं डीएम के प्लेयर्स। बहुत प्यारी गेम। सी बहुत प्यारे तरीके से कवर कर रहे हैं डीएम के प्लेयर्स। 40-25। डीएम का एक प्लेयर नहीं, वो चल पड़े हैं। मुझे लग रहा था कि उनका इंटरनेट का इशू आ रहा होगा, मगर नहीं। ए बी कवर हो चुका है। कॉर्नर पे कर रहे हैं डीएम को। लग तो यही रहा है कि अभी बी की तरफ जा रहे हैं, मगर और यहाँ पे 75 पॉइंट्स मिल चुके हैं एक्सएफ को। Capture the objectives. Enemy taking Alpha. Enemy taking C. एक्सएफ फिर आराम से प्यार मोहब्बत से आ रही है। बहुत डिफेंसली खेल रहे हैं वो लोग। Enemy has Charlie. बी अभी तक कवर नहीं किया, किसी ने भी नहीं कवर किया। डीएम बहुत डिफेंसली खेल रहे हैं। ए को स्पेशली कंसंट्रेट कर रहे हैं ए पे, ताकि एक्सएफ लेने की कोशिश की है एक्सएफ के एक प्लेयर ने, मगर डाउन हो चुके हैं। हम वो साइड पे से एक प्लेयर, कोई प्लेयर नहीं है ए पे, लग तो यही रहा है। सब वापस आ चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त एक्सएफ की टीम खेल रही है डिफेंसली। मेरा ख्याल है कि इधर न्यूक का कोई इनकाम है, अभी तक बी नहीं लिया गया। Hostile Predator missile inbound. Enemy taking B. Be advised. बी लिया जा रहा है डीएम की तरफ से। ओहो, बैड लक। इधर शील्ड लगाई गई है बी को कवर करने के लिए, और एक्सएफ बी ले रहे हैं। यहाँ पे रॉकेट मारा जा सकता है शील्ड को तोड़ने के लिए। अब पता नहीं क्या करते हैं। एक और रॉकेट की ज़रूरत है। Bravo. Hostile sentry gun in your AO. बस गेम अभी ख़त्म हो चुकी है। बहुत बैड लक है डीएम के लिए। ये लूज़ किया जा रहा है एक्सएफ की तरफ से। वो लोग कोशिश कर रहे हैं All positions locked down. कि डीएम अब कॉर्नर पे आ गई है। Has A.
Enemy airstrike incoming. Be careful. Objective almost डीएम के complete. प्लेयर्स Keep it कॉर्नर up. पे आ गए हैं, लगता तो यही है। Be advised, hostile sentry gun spotted. Enemy airstrike incoming. Be careful. Losing Alpha. Enemy sentry gun has been destroyed. डीएम के प्लेयर कॉर्नर पे आ गए हैं, बहुत बुरा हो रहा है डीएम के साथ, उनको कॉर्नर में लाया गया है और यहाँ पे एक्सेप्ट टोटली जीत गई है मैच, बहुत प्यारी मैच। ओके गाइस, नेक्स्ट मैच है, आपको बताता चलूँ कि ये मैच एक्सएफ वाले जीत चुके हैं। Good games. नेक्स्ट मैच है 9:30 PM, पोर्टल ई स्पोर्ट वर्सेस ESM विशियस 7।
know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I tell shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only getting jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. MD. JPB. You already know, baby. Yeah. I said, I already done it. Everything you wanna do, I already. You know that I
Try to believe in anything greater than a miracle. It wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. 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 If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control. 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 Negative bull, yeah, we could be taking control.
Yeah. MD, JPB. It's only right, baby. Yeah. Why you mad? I got a bag, bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, Joe. And if you think I'm frontin', you can run it back, yo. Go and run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Yeah, let's go. Look. I told Shorty drop it for a real one. Go ahead and pop it, let me feel some. Do it for the boy with a bag now. Movie star money making everybody act out. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know? I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज हम बस इधर कारने जा रहे हैं, फिर करते हैं। आवाज़ आ रही? हेलो जी जी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं पहुंच गया उधर, आप मुझे उधर एक्सेप्ट कर लिया मैंने। हाँ बस अब वो कारने जाते हैं, किधर ही आएगा मुझे लग रहा है। ओके पता नहीं, देख मुझे समझ नहीं आ रही ये फिर क्या चल रहा है। क्या समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? इफ़ी ये क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही ये क्या सीन है, ये चल क्या रहा है, व्हाट द फक, ये क्या है? किस चीज़ में? मैं यार वो उस सर्वर में जो आपको सर्वर दिखाया ना वो वाला, हाँ जी उसमें आप आ गए ना? हाँ जी मैं आ आपको गया रोम उधर। लेता हूँ।
मैं आपको उधर रोल देता हूँ, उधर उधर देखे ना जरा क्या चल क्या रहा है। हर बंदा, इतने ज़्यादा बंदे बैठे हैं VCs में, हाँ जी, क्या चल रहा है? हाँ, वही मैं वही खुद तो मैं परेशान हूँ, आज है मैं और ये परेशान, सब मैं कंफ्यूज सब हूँ, सब like सब ये क्या सब चल रहा है? मेरा ख्याल है आपके प्यार और मोहब्बत में यार सारे आए हुए हैं। नहीं वो सब लोग कह रहे थे कारने जा रहा है, तो सारे वो चीखें मारना शुरू हुए। वहाँ पे आके बैठ के सारे कि कारने जा रहा है, वो करेगा वो करेगा। वो सीन हो पड़ा है, लेकिन मुझे समझ नहीं ये हो क्या रहा है। वैसे स्ट्रीम चल रही है अभी तक और बातें सुन रहे हैं। इट्स ओके। अगर मैं मुझे रोल दे देते हो मैनेजमेंट का या फिर बाद में हटा देना। मैं अभी आपको रोल दिया हुआ है आपको, आई थिंक इफ़ी के पास है वो, सर्वर का ओनर इफ़ी है। मैं आपको वहाँ पे फिर भी रोल दिया है, एक स्टॉम का दिया है, मैनेजमेंट का मैं दे देता हूँ उधर मैनेजमेंट में आ जाओ, फिर आप उधर आ जाओ मैनेजमेंट में। कैन यू हेयर मी? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आई कैन हियर। हाँ अच्छा, मेरा माइक बंद रहेगा और आप ही, इट्स ऑन योर प्लेटफॉर्म। हाँ ओके, मुझे इन गेम तो बुला लो ना। मैं इन गेम हुई नहीं। मैं हूँ ही नहीं इन गेम, यानी मेरा ख्याल है स्पेक ने इनवाइट करना है, वही रूम बनाएगा। मैं बाहर हूँ, लॉबी तो से वो बाहर हूँ। आप रूम बनाए या कोई और बनाए? मैं फिर ये आई थिंक मुझे नहीं पता कौन बना रहा है रूम में, देख लो। जस्ट वेट, आई विल आस्क इफ ही। किधर गया है मॉडरेटर चैट मैनेजमेंट? यार मैं आजकल फुल्ली बिजी हूँ, इम्तिहानों में चला गया हूँ, इम्तिहानों की तरफ। हाँ जी, मुझे पता लगा है। और वैसे भी तबीयत भी आपकी थोड़ी ख़राब हो गई थी। वो दरमियान में थी, लेकिन वो फिर ठीक हो गया। आओ, ये मुझे पता नहीं था यार, प्रोजेक्ट एक्सट्रॉम। आपको नहीं पता? नहीं, ये तो अभी हम लोगों ने छुपा के रखा है फिलहाल, इसको भी उतना ऊपर नहीं कर रहे, ओपन नहीं किया अभी तक। देखेंगे बाद में, दिखाते हैं इसको। फिलहाल कुछ सोचा जा रहा है, अभी फिलहाल थोड़ा सा है, कुछ चीज़ें सोची जा रही हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। मॉडरेशन अभी कौन होस्ट? अकिम्बो, हाँ ओके, उसने कर दिया होस्ट, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके। ये एसएम कप मॉडरेशन किधर गई यार? कितने ज़्यादा चैनल्स हैं इसकी काम। क्या हो गया जी? ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आपको मैं उधर पे टैग करता हूँ। कार्नेज किधर है? मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। और दूसरी बात है, मुझे टैग मत करें, मुझे इनवाइट कर दें आपने मुझे। एक मिनट। ओके ठीक है, मैं इनवाइट कर देता हूँ। क्योंकि मैं पीसी पे हूँ और पीसी पे आपको पता है। चलो मैं आ गया। कार्नेज ला रहा हूँ। कार्नेज Hey man, how you doing man? राइट, मैं जरा किधर है तू कंजर? और उधर आजा, एग्जॉस्टॉम में मैनेजमेंट वाले में आजा। ओए भैंस की दम, मेरे पास तो गेम ही नहीं है। तो मैंने कहा मुझे बुला लिया भैंस, तो इन्होंने पता नहीं कहां से उठा के, तो मेरे पास तो गेम ही नहीं है, मैंने कहां से कास्ट करना है? गेम डाउनलोड कर, शाबाश, जल्दी जल्दी डाउनलोड कर। तो क्या बंदा है, कहां से डाउनलोड करूं? अच्छा रुक, ये एमी क्या कर रहा है ऊपर? मैं एमी को बोल दूंगा। एमी क्या कर रहा है इधर ऊपर? द फक, मैं ऊपर कब आ गया?
एमी जो कर रहे हो ना ये ठीक नहीं है बेटा, एमी ये ठीक नहीं है, बता रहा हूं पहले बेटा। एमी ओ भाई कास्टिंग के लिए बुला लिया, गेम ही नहीं है मेरे पास तो। हाँ तो डाउनलोड करना गेम, तू पहला मैच डाउनलोड करना, दूसरा पहला मैच में घुमाता चलूंगा। पहले मैच में सारे फैन बॉय होंगे तेरे पे, वो सारे आए होंगे, रिकॉर्ड हो जाएगा पहला मैच जाएगा हमारा। और ये कहाँ पे आया हूँ मुस्तफा? ये हम लोग कास्टिंग कर चलने के ऐसे पहला मैच तो पूरा ऐसे निकल जाना है, लोगों ने चैट पढ़ते। अच्छा मुझे गेम देखना था, बेंच शो था होने से। आपकी कितनी बड़ी गेम है? आपकी डबल आवाज आ रही है। हाँ मेरी डबल मेरी डबल आ रही है। मेरी मैं गेम में बंद कर दिया। क्या शिट है यार ये। अब कितनी बड़ी फाइल है गेम की? अब टाइम लगेगा, तो डाउनलोड पे लगा ना, फिर बात करते हैं। डाउनलोड लगा दिया मैंने 3 GB। मैं घर से बाहर खाना खा रहा था एक जगह बैठ के, और मुझे ये इफी के मैसेज आए हैं। ये बात छिड़ी किस तरह है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। मैं तो बोल दिया, मैंने कहा भाई ड्यू करेगा तो मैं करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। मैं तेरे कंधे पे रख के चला दी। मैं बेड पे पढ़ रहा था बैठ के चका सा, मुझे एकदम सेफ्टी का मैसेज आया, ब्रो कार्नेज कास्टिंग कर रहा है, लेकिन कार्नेज ने बोला अगर तू आएगा तभी होगी। हाँ तो मेरे ऊपर चढ़े हुए थे भाई, फुल मेरे कंधे पे रख के चला रहे थे। मैंने कहा कार्नेज ने क्या बोला? कहते कार्नेज ने बोला अगर ड्यू आएगा तभी आऊंगा। मैं कहा यार ये नहीं, मेरा आना जरूरी हो जाएगा। कहते हाँ तू नहीं आएगा तो सारा काम खराब हो जाएगा। मैं कहा यार चलो ठीक है। ठीक है। उन्होंने तुझे बोला कि ड्यूक ने बोला ड्यूक आएगा, तूने मेरे पे डाला, मैंने तेरे पे डाल दिया। नाइस यार, ये भी चलेगा काम। मैं तुझे पता है तेरे बगैर नहीं करनी थी भाई। मुझे पता भी नहीं है गेम में हो क्या रहा है, क्या सीन है, कौन सी गन्स है, पता नहीं। छोड़े हुए 4 महीने हो गए हैं। कहता नहीं आजा। मैंने कहा भाई मुझे ना पता है स्टैट्स क्या है, ना मुझे पता है मैप्स क्या है, ना मुझे पता है गन्स कौन सी हैं। मुझे मोनार का क्यों मैसेज आया? ड्यूक क्या आया? मुझे मोनार का मैसेज आया है। तुम लोगों ने कुछ कहीं लिखा है? हाँ नहीं यार, क्या हुआ है? कह रहा है, पढ़ के बताता हूँ। ऐसा ना वो क्या नाम है, स्ट्रीम ऑन हो यहाँ पे ना, बड़ी ऐसा ना जाए सीन ही बैड हो जाए। स्ट्रीम ऑन है? स्ट्रीम ऑन है, स्ट्रीम ऑन है। रहने देना, पढ़ लेते हैं। मैं आईपैड से आऊँगा फिलहाल। मैं उधर पीसी पे बैठा हुआ था, पढ़ रहा था। आईपैड जाने लगा मैं भी। ये लो जी। चलो मैं पीछे जाता हूँ, मोबाइल से जाता हूँ। ठीक है जल्दी आईपैड करता हूँ। दरवाजे खोलने ना चाहिए।
गर्दन टूटने वाली हुई है मेरी, मैं पढ़ के तंग हो गया, गला मेरा जब फंसा हुआ। नहीं ब्रो इधर इतनी ठंड शुरू हो गई है लाहौर में, तेरी सोच है भाई, अजीब फक शो है, पता नहीं क्या है, भैंस की दम एकदम से ना बारिश हुई है, और ना बारिश के कुछ लाइक 24 घंटों के अंदर अंदर ना मौसम का लाइक आउटलुक ही कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया, बहुत हैवी ठंड है। और मेरी आवाज़ सही आ रही है? हाँ क्लियर आ रही है। ओके गुड हो गया जी। नवीर भाई आवाज़ सही आ रही है? आई थिंक क्लियर आ रही है। मैं जरा स्ट्रीम साथ साथ खोल लूँ, स्ट्रीम की चैट भी पढ़नी होती है, वॉइस अच्छी आ रही है। बस सेट हो गया, बेस्ट है। हम लोग की आवाज़ आ रही है स्ट्रीम पे अभी फिलहाल? जी इस क्लियर है, गुड हो गया। इट्स परफेक्ट। हमारे मैच की कास्टिंग वीडियो का इनकारनेज करें प्लीज। क्या कहते हैं? कौन कह रहा है किधर? E4 वाले सेम्पाई। कहाँ पे? Okay, hang on. Let me just. Ladies and gentlemen, welcome to today's stream. आज हम लोग, oh my god, 30 बंदे ऑलरेडी स्ट्रीम कर रहे हैं। ओए आवाज़ तो कम करना, तेरी आवाज़ बैको कर रही है। कार्नेज मेरे उससे हो रही है? अच्छा हाँ, आई थिंक तेरे तू वीडियो तू देख रहा है ना स्ट्रीम? आई थिंक तू देख रहा है स्ट्रीम। ऑलराइट, मैंने तो फोन पे खोला हुआ पीछे। हाँ तो उसी की आवाज़ आ रही है आई थिंक। लेट मी जस्ट शेयर दिस वन मोर टाइम। यही फोन में भी शेयर कर देता हूँ मैं, डिस्कॉर्ड। वैसे इधर मैंने शेयर कर दी है और ESM में भी शेयर कर दी है, बाकी दूसरी जगहों पे आप शेयर कर सकते हैं। मैं उस सेम जगह पे दोबारा करूँगा, लेकिन उसमें मैंने वो डालना है कि कार्नेज भी आया हुआ है। उस भाई कार्नेज क्लिकबेट है हमारा। नाइस स्कैम यार, नाइस। सो यू स्पॉइल माय फकिंग डिनर फॉर जस्ट दिस। यस सर, बिल्कुल फॉर सम व्यूज। बिल्कुल। यस सर, वी आर। सब मुझे ये बता, मैंने कास्ट कैसे करना है जब मेरे पास गेम ही नहीं है? पहला मैच कास्ट करेंगे ना। तो एक काम कर, तू मुझे बोलता जा वर्बली कि यार ये हुआ, अच्छा शो ने इसको मार दिया, उसको मार दिया, मैं कहूंगा वाओ यार, वाओ नाइस, वेल प्लेड यार, एक्सपेक्टेड। ये कौन चलेगा कि नहीं का मरना साथ करे आए ना आए। Alright guys, lobby fill हो रही है, इधर से हम लोग देख रहे हैं 29। Oh my god, the fucking spam! I just came on and there's so much spam. Oh my god. क्या spam में क्या? Bro, heavy spam है। There's a lot of people saying तेरे लिए भी बंदे आए भाई। Sunrise वाले तेरे लिए आए। They're saying AOA, अस्सलाम वालेकुम, Carnage, the legend Carnage, here for Carnage. Thank you boys, thank you। असद भाई अगर हैं तो उनको मेरी तरफ से प्लीज सलाम दे दें। हाँ बिल्कुल हैं, बड़ी देर हो गया उनसे। बिल्कुल आया मैं इधर। अच्छा, Sahil, why does Wase have Sway PFP lol? Alright, so we have 43 people watching guys। जिसने स्ट्रीम को लाइक नहीं किया हुआ यार, स्ट्रीम को लाइक करो, फटाफट से सब्सक्राइब मारो, ठीक है? इसको कहते हैं स्ट्रीम को प्रमोट करना, तो मेहरबानी से ये कर दो। और उधर से हम लोग देख रहे हैं भाई लॉबी में ऑलरेडी बंदे बैठे हुए हैं। सैमी आ चुका है, स्लेयर आ चुका है, पैस की तरफ से पूरी टीम आ चुका है पैस का। यहाँ पे मुझे ये बता कि ये तेरे why are you being influenced by Indian casters? Because last I checked ये तो इस तरह तो वो जो बॉय इंडियन कास्टर था वो इस तरह कास्ट करता था।
वो तेरे उस को बॉय क्या ने इसको मसला है? मार दिया, फिर वो उस पे चढ़ गया, फिर वो उस पे चढ़ गया, उसने इसको मार दिया। हाँ हाँ हाँ, ये तो What the fuck? क्या सीन, ये तो वो वाला The सीन fuck, कर रहा है bro? तू क्रिंज क्यों हो गया इतना? Why so cringe bro? जा जा KFC वालों को बुला के सबवे मंगवाते हैं, तू उनके ड्राइवरों से मुझे बता रहा है क्रिंज क्या होता है। यार हारिस मान लिया भाई, आ गया कारने जा गया, देख लिया उसने तेरा मैसेज कर। किसका मैसेज, मुझे तो नहीं पता किसका मैसेज। हारिस कहता है कार्नेज 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 कार्नेज। हारिस क्या उसका नाम था गेम में, पेस हारिस या कुछ और नाम था बोला? ये हारिस फाइम हारिस यू मीन? बिल्कुल। कैसे भाई बस कर दो, कार्नेज आ गया, कार्नेज सदमा आ जाए ना उसको। बंदे स्पैम करे तेरा नाम, यकीन करी। वो क्या हो गया भाई? कार्नेज वोट बी टोल्ड मी इन स्क्रैप यार्ड। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है तुम लोगों ने उनको बॉयज को बोला हुआ है कि मैंने कोई गिव अवे करना है, कोई ऐसा सीन है, कोई नया ड्रॉ तो नहीं आया हुआ, और तुम लोगों ने कहीं अनाउंसमेंट तो नहीं डाल दी कि मैं कोई ड्रॉ दे रहा हूँ? हाँ ब्रो, कल आ रहा है ना, डीगल का ड्रॉ आ रहा है कल। The fuck for .50 GS नाम है ना उसका। हाँ, इसमें भी डीगल वो इसमें भी आ रही है, कॉर्ड मोबाइल में भी आ रही है। कॉर्ड में आ रही है, कल Nice. लेजेंडरी आ रही है वो सुबह 5 बजे। मैं सोऊंगा ही नहीं पूरी रात। तू तो हर हाँ, बोल दे। मैं थोड़ा फिल्टर कर दिया इसलिए। इट्स बेस्ट शो नॉट फाइम शो। नहीं सर, ये है ही फाइम शो, तो 100% फाइम शो। मोनार्क भी आया है, मोनार्क देख स्पैम कर रहा तेरा नाम सही किसके से। मोनार्क यार, बॉय से बड़ी देर बाद। मोनार्क नाइस टू टॉक टू यू ब्रो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड कैली वगैरह भी यार सारों से कह के, मतलब बड़ी देर हो गया, आई मिस टॉकिंग टू देम। तूने साथ चैट नहीं खोली भी यार? मैं बंद कर दी थी क्योंकि तू कह रहा था वो हो रही है, मैंने तो फोन बंद करके रखा था। मैं देख लेता हूँ एक। चाचे वीडियो को पॉज कर दे ना, लाइव स्ट्रीम पॉज कर दे, कमेंट्स चलते रहने दे। बिग ब्रेन यार तेरा। फक यार, ब्रेन लैग हो रहा है मुझे तो। लॉल खेल के हो जाता है, कोई बात नहीं। हाँ, बिग ब्रेन गेम। आईजीएल ऑफ पेस का आईजीएल शो कर स्कार है, सॉरी। वो कल मेरी इस बात दोबारा लेगा कि तू मेरे को क्रेडिट नहीं देता, मैं आईजीएल तू शो का नाम लेता है, तू किसी और का नाम लेता यार। By the way guys, huge thanks to Ify for sponsoring the entire thing. Like he's ESM ने, like वो कहने को सिर्फ ESM है, but it's mainly हाँ, but he's rich यार, बस। हाँ, he's fucking loaded with money, so यार ये boys कभी भी ना भूलना, इफी को लूट लो जितना लूट सकते हो, अभी मौका है before he quits squad। जितने draws निकलवा सकते हो, जितने battle pass निकलवा सकते हो। And PS, you didn't hear this from me। ये तुम लोगों का आवाज नहीं है, यहाँ से कहीं और से आवाज है तुम लोगों को, बिल्कुल। ये तुम्हारे अंदर का वो जगह है, शेर जगह है। मैं क्रिंज हो गया यार बहुत ज्यादा, कार्निश तेरे बगैर कसम से सड़िया बहुत मारता हूँ आजकल। इफी सबका बाप है। मेरा तो नहीं है ब्रो, आपका होगा। नो ऑफेंस, लेकिन मेरा बाप मेरे घर है। मेरा बाप नहीं, लेकिन मेरे बच्चों में से एक बच्चा है। It's great to see everyone just spamming the ad यार, मजा आता है। If he's just a lucky draw, if he's just a lucky draw दे दो। हाँ Bro, यार, उसे लूट दो जितना लूट। साद request to join। Right, साद is जगह है लॉबी में इतनी, ओके है। Alright, is sorted then। The fuck, Let's go, boys। where is this British accent coming from? यानी आपको पता है ना, हम लोग यार नहीं, मतलब सब कुछ छोड़, मुझे सिर्फ ये बता कि ना मैंने ये कमेंट पढ़ा है, I have to like you know assess के what went behind
this. Muscle nerd, the name of decency. Yeah, like what the fuck is this comment? ये मुझे जनाब देखिए मुझे नहीं मैं बताता हूँ नहीं मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि इस कमेंट के पीछे क्या है लाइक पहले ही तो बता ना ये लिखा किसने पहले तो ये बता मसल नर्ड द नेम ऑफ डिसेंस अच्छा हाँ नहीं like why would you write this of everything you could write you just wrote this out of the blue why I'm trying to figure out the thought process and that is exactly what I'm doing like you could say muscle nerd the name of I know physical appeal muscle nerd something cool whatever जो भी muscle nerd the name of decency but यानी आपने वो देखे हैं वो जो एड्स होते हैं पाकिस्तानी एड्स हाँ ये वो सीन है भाई स्टार सिटी द नेम ऑफ लग्जरी मुझे यार commentary made me wanna cry. Duke, how you take assist on vibe? TSNL vibes. Muscle is smart. नहीं कहाँ muscle is smart? केड़ा muscle smart? क्या में हो गए तुम लोग? Muscle is smart. Muscle, sorry, no offense, but you're not smart, sir. Yeah, I remember the PSNL scenes. Duke. हाँ, PSNL scenes were lit. To be honest, they were really lit. It was all great, yeah, at that time. Back at the time, things were less complicated and it was really great to have all the fun. You know, you could bring back PSNL. Issue is the name and the branding. That's the main issue. We cannot bring PSNL back because branding ke lihaaz se, I think that was... branding में PSNL, P stands for Pakistan or Portal? I'm not sure. Portal था Duke. Portal था. The game has started and Saad is here with us in the commentator booth and he's just sitting around. Carnage. Hey, एक second. It's an honor. Oh, Saad, how are you, bro? How are you, Toxic? How are you, Toxic? अच्छा नहीं, Duke, did you just say the game has started? The game has started. यहाँ पे अभी भी start हुई है. तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? तुम बैठे हो तफरीक कर रहे हो एनिमे बीइंग एनिमे यहाँ पे वो पता है ओए सुन हार्ड पॉइंट है पहला मैच तो टोटल वाले एनिमे और एमी दोनों को खिला रहे थे वेट व्हाट क्या करना चाह रहे हैं ये बॉयज सो फार तो स्कोर ऐसे जा रहा है कि पहले 10 पॉइंट हार्ड पॉइंट से 87 नहीं निकाले सो फार शो इज कंट्रोलिंग इट अभी स्कोर स्टार्ट हुआ है शो तो है ही डर्टी ट्राई हार्डर है एक नंबर का तो पता ही है शो इज लाइक शो प्लेज गुड एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट अगर गेम में कोई एक्सप्लॉइट हो कोई गन हो मेटा गन हो कुछ उल्टा सीधा हो वो उसको भी यूज करता है लाइक डबल मैंने तुम लोगों को इसीलिए बोला था इसको ना फाइम में भेज दो कि तुमने मेरी बात नहीं मानी he actually plays good and then on top of that akimbo है ना akimbo इतनी like everyone hates akimbo at the moment like it's like what is exactly is akimbo is it like using two guns of the same type is it like an operator skill or what nahi akimbo is a perk that you can use like it's like having two MSMC one in each hand दो MSMC चलाओ at the same time भाई that's disgusting vector है अच्छा हाँ what I was watching the other day was vector आ गई थी ना इस गेम में and it's pretty good नहीं it's pretty good वाला मसला नहीं है the issue is vector using two vectors at the same time like you can shoot two of them like one in each hand that's disgusting यार and show का ये सीन है like he's और ये akimbo यूज करता होगा akimbo hard यूज कर रहा ब्रो उसने 2-3 क्लासेस ऐसी बनाई है और like हम लोग we were like specifically because at that time मैंने ब्रेक नहीं की थी and अभी फिलहाल तो मेरे एग्जाम से मैं कम खेल रहा हूँ but at that time I remember Joe was just hard abusing these like akimbo at the same time bro when he जिस tournament में ban होती थी akimbo उस tournament में फिर भी ये normal gun से लेता था bro like the guy is talented as fuck to be honest he's pretty the reason why we got him in the lineup for best was because he was at that time not the best so definitely one of the best players playing for Pakistan
I'm hurt. I'm sure you would agree with that. Yeah, obviously, like show has been consistently performing. Like the issue is, people were like at this beginning, people used to say, "Okay, bhai, show is a bit Targets in movement sight. bugs and all that," but then that got fixed and show was still on top, and then that came back and show still on top, and then there's Akimbo that came and show still on top, and then Akimbo is banned in tournament and show still on top. Like Yeah, I the do guy, remember. he's Yeah, consistent as fuck. yeah, and one thing I do remember about him, although I've left the game for quite a while now, is that he was exceptionally good with weapons which allowed you to have high mobility, because his movement was pretty much on point. Yeah, His movement exactly. was actually, because I remember you being having a huge thing for movement based players as well. So Show was definitely top on that list. No, score to देख इस वक्त, like this is the fourth hard point. I think the fourth hard point has started, or is going to start. And the score is 71-78. Enemy inside. Like so fucking close. Neck Achha, to neck. I'm actually behind you because I have to watch the stream on my mobile and I'm on Discord on my PC, so I'm a bit behind. But the match is exceptionally intense. I don't really know what the meta is right now, but I can tell from the way The both these teams are playing. Okay, the Akimbo is banned in this one. So specifically, Akimbo is banned at the moment, and that's one of the reasons like I'm not seeing any misuse of these things. Like, so at the Yeah. same time, the thing is like what we are seeing here is people using a hard like shotguns are being used, but they've got nerfed to like death. But Empo's still using a shotgun, and that's pretty good. And Drax was also using a shotgun. Issue was you could use shotgun like. जैसे ही the meta of shotguns got good and shotguns took off, उसी वक्त Akimbo release हो गया. And now it's like, if you are Akimbo versus shotgun, shotgun doesn't stand a chance. It's that fucking disgusting. Like it's that hard. So That obviously, makes sense. it's just like shotgun. Yes, if you miss, like the issue was first they didn't have a nerf on the shotgun, which made it so that you could spam shotguns like basically, and you would get one tap. But then they nerfed it and they released Akimbo. So shotguns are basically unusable. Thank you, that's it. Basically unusable. That makes sense. Yeah, that makes sense. But one thing I've noticed, surprisingly, is that I thought Annihilator would be nerfed, but I still see some people using Annihilator right now. So, which means that it's been untouched. So it's pretty much, safe for you. It's nerfed, kind of nerfed. You could say it's nerfed, but it's like it's nerfed in a way that it's still viable. It's not bad. So what's the go-to operator skill right now? I mean, if you're tryharding, so what's your go-to? That's actually a really good question. You could use the shield, because the shield is now giving damage instead of just flashing at the start. It's releasing micro. The old shield. You mean the one because The ballistic. last I Yeah, checked, there's a There's new one shield, coming out. there's a ballistic shield, yeah. So the defender shield, it's now. Strike incoming. Be careful. Lost the lead. Friendly sentry gun deployed. Hostiles have destroyed your sentry gun. Game is currently going neck and neck with Pest 121 points and Vicious 7 125 points. I think Saad is just like giving us a reality check. यार match तो देख लो मुकने वाला है. Yeah, he's just giving us a Let's reality go check. Let's go ahead and focus on the match right now. We have Scar coming in with that Goliath inside the hard point, and it's at 142 right now. Scar taking down 2 more kills, Who's winning? making it Who's 145, and Portal Esports seems to have this in the bag with just 2 more seconds remaining. That's to the end of the game. Portal Esports take the win against Vicious 7 at 150 to 125. Okay, so I would say this I'm was close. I'm actually behind you by 15 points, but This thank was you for quite- the update. Nee, this was quite close. Yeah, I considering mean the it fact could have been that- anyone's game. We were No, watching. it was anyone's game. Like till the last hard point. The last hard point, Scar just took a Goliath and went in, and that Goliath, just because of the specificity of the second hard point and standoff, it's really hard to throw down FHJs and RPGs inside that small confinement. And that's why Scar just took control of the stairs and was able to keep everyone out, and it was just an easy Yeah, win for but them. one thing, Duke, I've noticed, and which we did talk about when we did, hang out on Discord, was that the new lineup, the ESM lineup, sorry, they've shown some really considerable improvement. The one which we were talking about earlier. Yeah. I mean, they've completely transformed. Let's be real. When we were managing together,
then things were completely different, and now it's completely different now. The teams listed under the ESM banner are on a different level now. They're all very competitive, if not equally competitive, and it's a competition between the best. And luckily, they're all under ESM's umbrella right now. So Vicious 7 is also a really amazing team from what I've They noticed have so far. proved like, yeah. Okay, so here's the thing. Since you've left, like you set up all, like you gave us the idea of what project you from and all that, and it honestly it took off after you left, and it was kind of sad that you couldn't be with us. At the same time, you're always with us, so it's not a big thing, to be honest. Yeah. And Yes. so I mean, as long way as we you have my shaped it, account. that I do, but I'm not using it at the moment. Here's the thing. With I'll just go back to the lineups. The thing with ESM right now is we have a bunch of lineups and we're expanding rapidly. And the way that Iffy has like led this throughout, like he's been subliminally important Yeah, in all of this. I mean, He's just jokes been aside amazing. and all humor aside, the credit, if he deserves all the credit for completely, Yeah. keeping this setup intact. I mean, you guys have been chipping in, but if he's been he's been the anchor Yeah. behind all of this, Yeah. and he's been holding it together right now. And the reason why this community has been, very, very united, and you've been having a lot of tournaments, both international and domestic, is because Iffy has been contributing to the local scene as well. So Yeah, I think he 100%. deserves a lot of credit as well. Yep, 100%. Obviously, like, here's the thing. Like, if he has been the backbone of all of it, at the same time, like, you gave us the idea for the thing, and then it came out to the micromanagement of all of this, which was handled by Sammy and Arbiter. And Yeah. like, we Yeah, saw I this mean, also, no this offense was to anyone. handled it. I'm sorry, I'm cutting you off, but no offense to anyone if I didn't name you, but I don't know what's been going on behind me. So if I missed out your name, I'm very sorry, but all of you deserve more credit than anyone. And thanks to you for managing everything. And basically, yeah, that's it. So obviously, like right now, we have currently we've got Portal Esports, Vicious 7, Sixth Sense, Vitality, X-Fate, Phoenix. We've got Nizam, and we've got an academy going on in. Yeah, there's also other teams. I mean, it's not just ESM. The other teams which are not in ESM as well. I mean, Samurais in Space, Fime. All of them, they've actually Fime is stepped their. dead. Fime is gone. They Really? started hacking. They started hacking and then started boosting, and they just as a result, everyone just. I mean, and the issue isn't with, that issue with isn't no, the that issue what with they them did was- in PUBG? So why are we even surprised? in PUBG they in PUBG they started out like that, and here they poetically ended out like that. So the issue with them was they basically started hitting on everyone who like they just started Yeah, I hitting mean- on everyone, and then they did something wrong. So it just Yeah, but it just let's just snowballed on not. them. They're not Yeah, even let's worth just not go talking on right the- now. So let's just let's not go not on discuss that. them. But I mean, to be fair, the other teams which are not in ESM as well, so they've also stepped out their game a lot, and I mean, it's actually a proud moment for me personally to see a lot of these Pakistani players on the leaderboard and is on the Galaxy network as well. Because when I obviously, we was saw- I'll Yeah. just mention out this to you. Like we've seen an entire lineup that had Pakistani players in it. Like they were all of them were on the leaderboards, and that was like really unprecedented, specifically for anyone. Like I haven't seen any like lineups. Even if you go as far as Tribe and all those lineups, they haven't all pushed to the leaderboards. So having all 6 of your players in the leaderboards, that's a huge thing, to be honest. And Samurai did that. That was great. Yeah, on their part. and then the fact that teams are competing to be in the Galaxy network. I mean, I saw Portal Esports listed in the Galaxy network. That was, if you remember correctly, when we used to have our sessions on managing, we used to always have the aim of having at least one team from Pakistan on the Galaxy network. We're gonna And, have 2, right? or actually we're gonna have Yeah. 3 soon. Success Exactly. has managed to grab the number 1 place on the CLT, which is a GN major qualifiers, and they're like going to be the top 4 teams. There's going to be 8 teams in the GN major, and 4 of them, that's going to be Success is going to be on that. So Success has already made their way into the top 8 of one of the tournaments, like that's a GN tournament.
And then Portal is also playing a lot of game tournaments as well as Samurai. We've seen Success, we've seen even V7. They managed to become runners-up on Autumn Yeah, League I mean, Season 2. I actually, that was the match I saw. That was the first COD Mobile match, competitive match I saw after like 3 or 4 months, and I was actually really impressed by the way Vicious 7 was playing, because they seemed like a completely different team from when I left off. So I mean, some good came out of me leaving Duke, I guess. So I feel proud. I feel proud and happy about that, at least. But yeah, generally, I'm actually very proud to see that all these teams have grown, and I mean, it's a very nice feeling to have. I mean, let's just go ahead into the match. The second match has started. We're seeing a Vicious big 7 is rushing A. Vicious 7 has actually held on to the side of A side due to the reactor melt in the meltdown. And they're just holding that chimney right down through the middle. Portal Esports trying to make their way into it. Muscles comes from behind Bilal, and he's going to go ahead and take down Ahmi and Bilal. Get traded for Sid, and Muscle Red also gets traded off by I think Scar it was. Now it's 1v3 for Scar versus Drax, and Drax is gonna go ahead and snap that shotgun onto him with that aim in the face, and it's going to go ahead equalize the rounds for them. It's going to be 1v1 situation for both of them. Carnage, I'm really sad that you don't have the game installed. If I tell you what I'm doing right now, you're going to have a laugh. I'm just watching all these guys and the guns they're holding. So they're actually holding a few new guns. So I'm trying to figure out which gun this is. But I recognize Muscle's gun from Warzone, because that is actually a 2-tap gun in Warzone. It's an Echo. And That's Echo. I have the privilege of never losing Gulag with that gun. So Echo is actually my best partner as far as Warzone is concerned. Right. Did we just see? Did that just happen? Did they just switch spawns? How? Wait, how? Saad, were you able? Like, I'm not sure if you did see that, but Portal and V7 just rushed through the middle of the map and switched spawns, and it's now Portal is just confused. They're just like, "Where's everyone?" Because Portal has hold of both bomb sites and no one has planted so far. They're just waiting on everyone. This is interesting. This is quite a new tactic coming from the side of V7. It's going to be up to Drax, Empo, and Muscle trying to hold down the admin side of the CT. And NMA coming up, Show coming This up. is Meltdown, right? They're being surrounded Yeah, from all Meltdown. sides. Yeah, but the issue is they are surrounded, but at the same time, no one's pushing them. Because if you push them, they've got 2 shotguns and HVK. And HVK does, like, Carnage, I'm not sure if you know that. HVK is actually broken with the large caliber ammo. It does 48 damage to the head. What the hell? Well, and when I was playing, you know, HVK was actually the most useless gun, like 4 or 5 seasons ago, if you remember. But we used to, you know, or me and you, we did have a conversation about how shit this gun was back 3 or 4 seasons ago. Yeah, because you were trying to buy the bundle. You had the bundle for the. I did have I the didn't bundle, have. yeah, I had the fucking crates, and I was pissed at you. So we did. Yeah, I mean, we did use. Exactly. Justified myself. Many could You were like, "मैं तो कर-" I mean, is Saad here? Yeah, sounds good. Get ready for the next round. Saad, Yep. you still sound amazing, bro. He's Well, thanks to you, bro. Defend the objectives. You know, he's been to Pakistan a few times, and he now can speak Urdu. What? Yeah. Are you sure? Gee. Why do you sound like Scar? Same. What do you call it? Hey. Who is in KBH? And KBH, I think he's an Arab player. He's really good though. I've heard he's really good. Nukba, the guy who used to Nukba. be in which clan was it? The one which beat Odai. I remember they did disband PRB? while I was no, the other JLD? ones. Yeah, Jald. मेरे को नहीं JLD. पता इतना. अच्छा, JLD. Okay. Nukba is an Odai player at the moment, I think. Okay. Yeah, because he was in JLD when they beat Odai, and then JLD disbanded and joined. I mean, Alright, most of them. let's get back to the game.
let's get back to the game because this is quite interesting as the situation turns out. It's going to be 3v3 for both of these Enemy teams. Show and contact. Sammy holding backside on towards the spawn. Bilal being the solo guy inside the reactor holding off that area. B completely on towards the control with V7 control completely Nami controlling takes this the area on plant the at B. generator. Sammy does take the plant at B and he's currently at as a moment. At the moment, like, no one's watching his flank. That's the thing. I think Empo is kind of watching his flank, but at the same time, if someone were to push through mid, they were gonna go ahead and take Sammy out easily. But right now, no one decided to push through mid, and obviously, no one would know if they're supposed to push through mid. The Empo is going new to go ahead and crosshairs host look mostly. pretty nice, though. I have to comment on that. The The new crosshair? cross. Yeah. The I think you can customize crosshairs now, right? No, I don't think we can. I think you can because that's not how an ACOG looks like. The one on the Oh yeah, show's art. okay, yeah, that's like the reticle. Okay, yeah, we can. Yeah, the reticle part. reticles, yeah. It's going to be a 1v1 situation for both Bilal and Clear. Bilal is going to go ahead and take him down. It's going to be 1 second before the bomb detonates, and the bomb detonates, giving the win to B7 and making it equal at 2-2 right now. Oh, both of these teams going neck to neck right now. Let's just see how this continues. All the players with different names. I know, yeah. Nakpa is Winter. Is he Winter? Okay. So Nakpa is Winter. He changed his name to Winter. Ah, so okay. That's what who this guy plays with. I don't know. Someone from Odai just. The shotgunner, what's his name? I streams with him, I think, a lot. So, we need Duke to commentate every match. I can't commentate every match, honestly speaking. If you can get Garnish to commentate every match with me, I'll do it. Wow. I'll do it. Nice. ये भी ठीक है ना? Alright, anyways, let's just go ahead back into the match with Saad being able to go ahead and comment with me live as we see Drax coming upside on towards Anime. He's gonna go ahead and take Anime down. It's going to be up to two of these guys, Show and Emmy taken down low by Sammy. He's gonna go ahead and get pushed by Empo, Muscle Nerd, and Sammy at the same time. He's gonna go ahead and get taken down. Empo goes ahead and pushes him, takes him down, and Show also gets traded at the other side. We're gonna switch sides at 2 and 3. 3 being the side from being the score for V7. I can't help but say this, but this is actually like the worst casting experience because I'm 15 seconds behind you and you're actually spoiling everything for me. And it is so intense, but whenever I'm, looking and I'm assuming that this is how this is going to play out, but you're telling me otherwise. So, thank you for the spoilers. किसने बोला था game delete कर? किसने बोला था game delete This takes the plant at B. Okay, that's a really quick plant for this side. Emmy is already dead. Wait, did Emmy get killed or is he AFK? I think he didn't spawn this round. Pushes in from the backstab with Empo No, he and got the whole killed. He team. got killed. Okay, so right now the entire V7 team is in their spawn. If you could go ahead and see through the bird's eye view, like they're just all gonna hold this side. There's going to be 2 smokes coming in from the side of Sky. He's gonna go ahead and find these guys. He's gonna get 2 concussions coming in from the side. Muscle is going to push him. Drax is going to push him. Drax is gonna get taken him down. Show is gonna go ahead and have after coming and taking off side. Comes to push him. And he's gonna go ahead and take it down. Sammy's on towards the bomb. He's gonna go ahead and try and defuse it. It's going to be not enough time. Bilal's gonna go ahead and push him, and he's gonna distract Sammy just enough so that Sammy does kill him, but at the same time Bilal gets the defuse stopped, and as a result Portal takes this round. It's going to be a 3-3 situation for both of these teams. Anime using Man of War, and I'm seeing Empo using Type 25. This is quite interesting. I think this is their fast classes just for the round start. Right now we're gonna go ahead and see Emmy using the RUS, Anime using the HVK. No one's sniping. Actually, Show is sniping with the Arctic 50. That's interesting. At the same time, Muscle using his chopper, as usual, as he does. Muscle being Muscle, using chopper and LMGs. This guy is a beast with LMGs. I don't give him, we don't give him enough credit for this. I've never No, I mean, but that's pretty obvious. I mean, ever since we've known him, ever since we've been friends with him, it's been a given that Muscle was the best LMG player there was. I mean, I would go as far as... Bro, I haven't seen anyone in the entire Cordem scene play better LMGs than him. I won't disagree with you. Although I've been off since like 4 months or so, and I'm still off. But I mean, from what I've been seeing, Muscle. It's not over yet. Anime just pulled a dum-dum. While we were talking about Muscle, Anime just looks at the bomb. There's someone going for the defuse, and Anime is like, you know what? You can have that. I'm gonna go ahead and save. And then he realizes this is not Counter-Strike. You cannot save guns, bro. What the fuck? Wow.
Damn. That was sad. Anime must be Anime getting does lose some his heat in mind the for a comms bit. right now. Anime is going to go ahead and hear some heat in the comms right now in the team comms. I wish we could do the team comms as well as we as the Sony Xperia thing. The World Championship had team comms. That would be quite interesting to listen into team Mm. comms. Anyways, with that, obviously, let's go ahead back to what we were talking about. Muscle is probably the best LMG player I have personally ever seen. I haven't seen anyone else use such LMGs to such great proficiency. I will Obviously, second that. Muscle. I will mm, definitely second that. I think Muscle is not like he's not credited, but I think he's the guy who basically brought Chopper out as a viable and not even a viable, a proper spam weapon. Like it was a Also, weapon. Muscle's the KDA god. I mean, you're completely forgetting the part where Muscle has absurd KDA in domination and hardpoint. He 100%. always has an amazing score. He has this really low death count, and he always stacks up those kills really well. So I mean, I can't disagree with you there. And also another person I'd like to give a shout out to from I mean, I do see his videos every now and then, even though I don't play the game. But that is definitely Slayer. But with Enemy his in sight. sniping, he's become one of the best, if not the best snipers in Southeast Asia. I mean, I can say that, Duke. Can I not? Obviously, Muscle has been one of the best LMG players we've seen, and Slayer working his way and trying to grab that attention in the sniper area. Like he's trying to be one of the best, one of the better ones, obviously in that regard. And Slayer obviously has beat. I'm not gonna say any specific names, but Slayer has beat some really good snipers, and I've seen teams that play against V7 pull out double snipers just to be able to compete with these guys, and then these guys put up Drax as a sniper, and then there you go. And V7 still wins Yeah, the match. Defend the objectives. So The enemy has the bomb. quite interesting stuff has happened since you've left, and We can obviously certainly agree on one thing. Slayer is definitely versatile. You can see him right now sitting with 6 oh kills with the yeah, QQ9. Slayer is so here's the thing yeah. with He anime. always was versatile. Here's the thing with anime has been regarded as one of the better snipers in Pakistan. The thing with him is we haven't seen him frag to his absolute best and absolute consistency at closer ranges, right? We've seen Santa do that. We've seen Santa use the sniper like a fucking shotgun, and he's just in Yeah, people's faces. that guy He does was that. pretty good. Yeah, he was pretty good as far as low and medium range is concerned. He pulled off really amazing shots. That I Yeah, do exactly. definitely agree with And when you're doing. But one his thing about anime, Duke, I'm sorry I'm cutting you off, but one thing I will definitely say this about anime, because I did bring him in along with these other guys, was that anime, if I don't know if I'm making a premature statement right now, but anime is definitely the most clutch player Enemy I have contact. seen in the competitive, as far as the competitive area is concerned. And I think you will agree with the fact that the way he plays against very good teams is astoundingly different from when he plays against very bad teams. here's the thing. Here's the thing. What the fuck is Sho doing? Sho, look at that. Sho just goes in. He's gonna go ahead and find two guys. He's What gonna go ahead and shoot one what more. did He's he gonna go ahead do? and take one down. There's going to be 4 people camping inside one room, waiting for Sho to come in and walk in, and 4 of them with shotguns and LMGs and SMGs and all that. And Sho goes ahead, takes out one kill, comes out, goes ahead and challenges the second one, gets taken down eventually. But obviously, he's just put up a show there. Destroy the objective. Well, Anyways, I saw that. I mean, I just saw that right now. I mean, it was like watching something from the future being, you know, being prophesized about to you. So it was pretty amazing. Here's the thing. Let me just talk to you about something interesting. Anime. Enemy contact. We were talking about anime, right? I'm He's hurt. one of the better clutch players and all that. The thing with him is, as a third person, like as someone who's outside PES, I would say, yeah. If I was not in PES and I did not know what was going inside the team, I would probably say yes. Anime is probably the clutch player. Being in the team, I kind of have to disagree, and he kind of panics. And I'm not saying this is in a bad way, but he's just like,
he is the kind of person who would panic a little bit, but at the same time he does get pressure on, and then he takes that pressure off by making those clutch plays and eventually winning those rounds, and obviously that Okay, boosts I'm his morale. calling you from the past. I want to know if what's their name? V7 win this or PES, because as far as Maybe I'm takes the plant at concerned, B. I'm watching Muscle goes in Ehmi from the in a backside with 2v1 Slayer. situation. Yeah, Amy is going to go ahead and plant this Targets in off. sight. Muscle is going to push him, and then Blaze is going to push him, and they're going to go ahead and take him down. It's going to be V7 taking this round as well as the game for Thank you for the spoiler, themselves. Duke. Thank you for the wonderful spoiler. Oh my God! Muscle misses the bomb defuse, and he's unable to defuse, and Portal wins it. What the fuck? Did that really happen? I mean, I don't believe you, dude. That's bullshit. I mean, they would definitely kill Muscle. They would kill Muscle if that happened. I don't believe you. Yeah, it doesn't happen. Anyways, let's just get back into the topic. Obviously, these guys playing S&D Meltdown right now. Both of these teams being neck to neck to each other. Right now, we have 53 people watching this stream right now. Guys, जिसने like नहीं किया, like करो. क्या कर रहे हो यार? वो बटन कितना बड़ा प्यारा अंगूठा है यार, उसको दबाओ. उसके ऊपर nail polish करो. उसको सही दबाओ ना यार उसको. Subscribe भी यार कर दो क्या यार. क्या फजूल बातें कर रहे हो आप? दबाओ दबाओ दबाओ, क्या दबाएं? इतनी वेग बातें ना क्या करो यार. इसके ऊपर जवाब बड़ा हैवी है, लेकिन 50 बंदे देख रहे हैं. मैंने इसलिए बोला. Round, अच्छा, ये बेस्ट ऑफ क्या है? बेस्ट ऑफ 5 है. तो तू पुत्र टेंशन ना रहे, तू उधर बैठा रहे. तू नहीं जा रहा कहीं पे. Holy shit. Anyways, guys, obviously the third match is going to be domination firing range, and obviously this has been a staple for these teams. I was expecting some off meta maps, and like recently हम लोगों को domination raid खिलाया hardpoint raid खिलाया जा रहा था in a tournament, and we were just like, what? ये तो season 1 की vibes आ रही हैं, like what the fuck? Hardpoint raid is like no one plays it right now in comp, I guess, and people are bringing that back. It's kind of tough for all these teams to revisit all of those and practice all of those, because now the pool in tournaments is so huge, because there's so many tournaments. There's so many tournaments at the moment in the CODM scene. आज हम लोगों के for PES we had 3 tournaments clashing with each other. We had 3 clashes, not 3 tournament clashes. Which ये कौन सा tournament है? Which ये Esm Cup Pakistan right now. Oh, I see. साहब आप साहब यहाँ पे कास्टिंग कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है. वो हम पूछना तो पड़ा. थग लाइफ है यार, थग लाइफ है ब्रो, ये थग लाइफ है. Hardpoint raid is the OG map. Obviously, that map we used to play in it in season 2, season 3 maybe. Even when back in the day when we had inners in GH. I remember that we used to play. I miss throwing that. I miss throwing that. The raid के बारे में मुझे बस एक ही चीज याद है. I miss throwing that nade from the yellow supercar on the stairs on the opposite side, और फिर 2 सेकंड बाद आवाज आती थी +100. That was the best part about raid. Medals मिलते थे, चस आती थी यार. I'll just say one thing. What a performance. What a performance यार. What a performance. Come on. What a performance. Yeah, I mean, I did pioneer that specific phrase. Thank you for bringing it up. वैसे यहाँ पे मसल को गालियाँ दे ड्रैक्स बोलता है, इन रूम चैट में बोल रहे ड्रैक्स मसल को गालियाँ दे रहे वो लोग स्ट्रीम पे. नहीं यार, मसल को देनी बनती है, because he made the chopper so fucking famous. I'm pretty sure he's a cancer player now. Bro, कसम से ranked was so cancer after he made that chopper. Not even ranked. ESM queues, they were 10 people and all 10 were using choppers in ESM. It was annoying going against choppers in ESM matchmaking. That was completely just tab chadi thi. But then again we had rank rules instead of कोई scrim rules या कोई ban chant की जगह हम लोग normally we had rank rules. VC is okay. I'm not sure. नवीन साहब पूछ रहे हैं VC is okay. I think VC is okay. हम लोग को तो आवाज़ सही आ रही है अपनी.
Anyways, स्कार पता नहीं खाना खाने गया यार। एक तो मुझे स्कार की बात ही समझ आती है, ये 45 मिनट बैठ के खाना कैसे खाता है? ओए अभी भी ये करता है इस तरह? Does he कसम still खुदा do that की। shit? सुबह ब्रो What the टूर्नामेंट मैच fuck, चल रहा है, bro? टूर्नामेंट मैच खत्म हुआ है, कहता है अगला मैच था 5 मिनट के अंदर दूसरा मैच था, कहता है यार मैं कुछ खाना खाने जा रहा हूँ। मैंने जाके That's टूर्नामेंट just मॉड BS, को bro. मैंने जाके टूर्नामेंट मॉड को जाके डिले बोल दिया, ब्रो कैन वी डिले द मैच फॉर 30 मिनट्स? कहते क्या हुआ है? मैंने बोला हमारा बंदा खाना खा रहा है। That's just fucking BS यार। मॉड वाज जस्ट लाइक ऐसे कैसे वेंचर ये क्या कर रहे हो? चलो जिसका आ गया वापस, एंड वी गोना गो अहेड हॉप इनटू द मैच राइट नाउ। लेट्स सी क्या बनता है। भाई दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। क्या हुआ? डोमिनेशन फायरिंग रेंज यार। Oh. I made a new strat for this map. I made a new strat and मैंने इनको ये yes कराया था, and I want to see if they follow that strat. But I they don't actually see any name tags right now. They do. As Alpha. Enemy in sight. Okay, they They- do and they die. मेरे strat में आया था, and this is a pretty. It was a strat that I was focused, but like वो strat hit हो गया था एक तरह से. Because it was just a way too risky move and we scrapped it immediately because like we tried it 2 times and then we scrapped it. Basically the strat was if you spawn like on the shower side like behind wood, if that's your spawn, instead of capping A you would go all 5 and all 5 would just push trailer to C and you just So opposite spawn you mean? ऑपोजिट स्पॉन और साथ साथ ओपोनेंट के पास ए का कंट्रोल नहीं होगा, तो ओपोनेंट जब तक ए पे वापस स्पॉन होकर ए पे आएगा और कंट्रोल करेगा ए को, तब तक तुम्हारे पास सी भी होगा और बी का कंट्रोल भी होगा, और तुम लोग जब तक वो ए को कैप करेंगे तब तक तुम बी को कैप कर लोगे। बट देन वी हैड टू स्क्रैप दैट जस्ट बिकॉज देयर वाज सो मच रिस्क। तो हम लोग वी वर स्क्रीनिंग अगेंस्ट आई थिंक MYM और समवन एंड वी पुश्ड 5 ऑफ अस पुश्ड ट्रेलर, उधर उनका एक बंदा शॉटगन लेके खड़ा हैंड सीन हो गया। ड्यूक तेरी आवाज ड्रोन आउट हो रही है थोड़ी। ड्रोन आउट मतलब कैसे? मतलब हाँ अब सही हो गया बट लाइक दूर से आ रही थी काफी। I got shot. ओके माइक का इशू होगा यार, आई एम नॉट श्योर क्या सीन है। एनीवे लेट्स गो अहेड एंड सी द मैच हाउ दिस कंटिन्यूज as you see Forte being double capped at the moment, show Slayer fighting each other and Slayer वहाँ पे खड़ा हुआ चॉपर लेके स्पैम कर रहा है, टेम्पो भी चॉपर लेके स्पैम कर रहा है, Slayer मसल भी चॉपर लेके स्पैम कर रहा है, ड्रैक्स भी चॉपर लेके स्पैम कर रहा है। कर क्या रहे हो भाई? As Alpha. सारों ने टर्मिनेटर देखी है लग रहा है। क्या मजाक है Get ये? the chopper. ब्रो इतनी चॉपर स्पैम कर रहे हैं ये लोग। बॉल बैंगिंग हो रही है ब्रो। वही ये ना, क्या नया मैटर? नहीं ये मसल का मेटा है, ये मसल में उसी डाली हुई है। Need backup. ये मसल ने अपनी पूरी टीम को चॉपरों पे लगाया हुआ है यार। मजाक के अलावा इतना दिमाग खराब होता है ना बंदे का। बदले कुछ नहीं करा, बोलते जिधर जाओ उधर चॉपर पे हमारे ऊपर से है भी 100 एमओ 50 एमओ तो मतलब टुकड़ी बनती है। Hemi being classy as always यार, DL निकाल के बॉय चॉपर पे आ गया, चॉपर पे आ गया वो भी। हाँ वो तो उससे सही दूसरी पकड़, वो तो उससे दूसरी पकड़ी हुई है। like Hemi still showing some signs of class and वो अपनी DL से Hemi तो खैर शुरू से ही बैड एस है यार। He switched back to DLQ. He did switch back to DLQ and He's probably is he hearing me talk because मुझे लग रहा है वो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो रहा है इस बात से कि चॉपर की बेइज्जती हो रही है। उठा लिया उसने, दोबारा डील को निकाल लिया। नहीं आई थिंक he died and that's why he just picked the DLQ again. Oh damn. He almost capped B. और हाँ अब तो नया सीन है ना कि like that doesn't go away the time you spent on the point. वो नया मैं नहीं है, वो छोड़ आपके चुका था होते ना। भी था। नहीं आपके होते भी था, सुकून करें। मेरे होते हुए नहीं था। हाँ था, आप ICR गोल्ड कर रहे थे, मुझे याद है, बातें कर रहे हो। ओह हाँ सही है you're right. इसने सैमी को नहीं देखा और सैमी से मर गया। वेल प्लेड। सैमी इज यूजिंग मैन ऑफ वॉर, दैट्स एन ऑफ मेटा गन, वी शुड प्रोबब्ली स्पेक्टेट सैमी फॉर नाउ। दैट वाज एन ऑफ मेटा गन बट लाइक वो जो कार्डिनल जो स्किन है जब ये रिलीज हुई थी तो सारों ने बाय कर ली एंड देन पीपल स्टार्टेड यूजिंग दिस। फिर उधर से ही फर्क ने जो गन यूज करनी थी वो दुनिया यूज करनी है, यही सीन चल रहा है आई गेस। This world still a thing right now? Well, here's the thing, as an entertainer, yes, he's still a thing.
Ooh, a quick triple cap coming in from the side of V7 at the end, just near the end of the round, and the round ends at 72-75. That's interesting. इंटेंस हो गया तो बहुत ज्यादा, क्योंकि जहाँ पे मैं हूँ it's 72-65 in favor of Portal right now. Triple cap पड़ गया ना उसके बाद. Yes, Portal is like playing the absolute hardest. यहाँ पे you're seeing a different strategy coming from the side of V7. They're not pushing trailer at the moment, and उन्होंने already Bilal control दे दिया trailer का, and that's gonna go ahead and cause them to lose the entire match. The map controller, as a result, they're gonna go ahead and have Scar up in towards the tower area. वहाँ पे Scar ऊपर चढ़ गए हैं. इधर नीचे से Bilal आ रहे हैं पीछे से. He's going to go ahead and try and step on to A. वहाँ पे A को कर रहे हैं. I think V7 को इस वक्त वो पड़ गया है. Spawn trap पड़ गया at the moment. Sammy's gonna go ahead and hop on towards A. They're gonna go ahead and control A back. Show से पिछले control ले लिया. Show is going to get taken down by Empo. Sammy और Empo आते हैं. Flip करते हैं तो पीछे से Drax जा रहे हैं अपनी trailer की तरफ. Trailer he's gonna get taken down by Annie with the snipe coming in from that side. Slayer भी यहाँ से आ रहे हैं. He's gonna go ahead climb wood top. At the same time, Anime is going to go ahead and into 10 top. Scar still holding that top area onto the tower. He's going to go ahead and take one down. Sammy is going to get taken down by Scar. Drax is going to go top. Slayer is going to go ahead and hold that area. Drax is going to come through the top. He's going to go ahead and hold that sentry gun onto the B flag. But that Anime is just going to go ahead and spam that sentry gun with those Fidges. He's going to go ahead and take him down. This is Drax is going to move in towards trailer. He's going to go ahead and control of trailer. Scar is still on top. He's going to go ahead and Drax is going to go ahead and take him down. Enemy के साथ हैं मतलब ले देते हैं. Enemy is going to go ahead and talk to the sentry gun. यार मैं अकेला क्यों बोले जा रहा हूँ? बाकी कास्टिंग क्या कर रहे हैं? मैं क्या करूँ? मैं तो हूँ ही 15 सेकंड पहले. मैं 15 सेकंड पहले की कास्टिंग. All the work. I'm 15 seconds behind you, bro. Sir Duke, you'd make a pretty good rapper. Like, if you want some career advice, I'm giving it right now, free of cost. My lungs, bro. Anyways, Portal is going to go ahead and manage to go ahead and control off A again. No one on A. Anime is going to go ahead and respond to that side. Seems to be Scar who's going to go ahead with the Goliath on towards C side. He's going to go ahead and take Tempo down at the same time. You can see Drax and Sammy is going to hop on towards B. They're going to go ahead and try and tap B. They're going to go ahead and take that off. That's going to be a what do you call it? Cluster strike coming from the side of Sammy. He's going to go ahead and kill himself with this cluster strike. He can cause both of those teams to go ahead and lose that flag, and as a result, there's going to be another cluster strike coming from the side of force Enemy off the side. As I said, triple cap आ चुका है. I think this guy. I'm asking you from the past. Portal has the map control, and they have won 150, 110. Won क्या होता है? Won होता है. तेरे से तो मैं ये expect नहीं करता, boy. साथ. What do you mean? I can see the Pakistani influence coming in तेरे accent में थोड़ा सा. मुझे समझ आई है कि ड्यूक क्यों बोल रहा है कि तू पाकिस्तान है. ओह कार्नेज से हेवी वाले लैग कर रहे हैं. मैं लैग करूं? कार्नेज लैग कर रहा है? नहीं मैं नहीं कर रहा ब्रो. मैं कर रहा हूँ. Anyways, उधर से देखते जाओ तो भाई वासे is saying Wase is calling me out. वासे कहता है भाई I am better than you at rapping. वासे no cap I'm better. गेम के बाद देख सकते हैं ना ड्यूक. I'm pretty sure Duke can better draw too. ओ भाई रैपर बोला, रेपर नहीं बोला. क्या हो गया तुझे? What the यार awkward. इसके बाद देखते हैं. Anyways, we're gonna go ahead and see rap battle. Dakwa is asking for a rap battle. ड्यूक तू तो मुझे बता रहा था तू अली गुल पीर का भी रिश्तेदार है, तो I'm sure this is going to be a piece of cake for you, है ना? If you could look at my face right now, you would have that ganja PSL वाला जो नहीं, you kind of look like Ali Gul Peer. I don't think you've realized this, but you do look like him. Fuck, किधर से? देख ले bro. कैसे? किधर से? You're a लड़काना boy है तुम. तो वो कौन सा लड़काना का होता है? वो तो कहीं और कही है. I think वो
किधर का है वो? तेरे हैदराबाद? आसपास का ही होगा, चेक कर ले। अल दफा हो मार परा। कहाँ है इस पास पे आसपास के मेरे? यार मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है पोर्टल और V7 दोनों ने कोई ये ठान के रखी है पूरे 5 मैच खेलेंगे ये लोग बेस्ट ऑफ 5 के। नहीं नहीं यार, बस भूख लग गई है ब्रो। जिसने भी जीतना है अभी जल्दी से जीते। मेरे सामने KFC पड़ा हुआ है, खाने खाएगा? किस तरह मैं ना कर सकता हूँ ड्यूक KFC को? The muscle is replaced with Knight. Muscle को bench कर दिया उन्होंने। Muscle is benching. He's getting benched at the moment. Fuck यार। Muscle उसके call outs नहीं आ रहे। क्या मतलब? What does that mean? कि muscle call outs? That means कि yeah, the issue with muscle is he's kind of lazy, and this is like obviously I'm not casting shade on anyone. Like मैं अंदर रहता हूँ उनके साथ, I know what these guys are like. हाँ, I mean normal बात हो रही है। Muscle is just a bit lazy, and he's got new headphones, and उससे headphones चलाए नहीं जा रहे, and he's just too lazy to read through the paperwork and connect them properly to his iPhone. Holy shit, that is fucking lazy. I mean that does count as lazy. Muscle the kind of guy who waits for fungus to grow so he can eat a mushroom. नहीं छिलेगी, ठंडी हो गई है। We lost the lead. No, the viewers. क्या होगा? JYT कहता है डिड्यूक ने ऐसी ठंडी मारी है स्ट्रीम रुक गई। Enemy contact. Destroyed enemy's UAV. चलो जी, ये पोर्टल ने जीत जाना, फिर से मैच रुक जाना, टुक कर है। मुकाओ मैच खत्म करो। क्या हुआ है? क्या स्कोर क्या चल रहा है? 82-52। क्या मोड क्या गेम का? हार्ड पॉइंट क्रैश। और मैप कौन सा? क्रैश। We got shot. इसके बाद हम लोग बैठ रहे हैं उस पे। Stream is back, I think. Yes, sir. Stream is back. Targets in sight. Share this somewhere. Hardpoint contested. Hang on. Hostiles have Where do I captured put the it? hardpoint. मैं याद नहीं कहाँ डालूं। Online. We are back. Hostile Predator missile inbound. I'm down. One. Hardpoint identified. There you go. Contact with enemy. दिया। Hardpoint is कहता है यार स्ट्रीम डेड हो गया था, बट इसी स्ट्रीम ठीक करो। सारे मुझे टैग कर रहे हैं, वीडियो खानी स्ट्रीम ठीक करो। सारे भाग गए हैं या आई नो सारे भाग गए हैं, क्या कर सकते हैं हमारे स्ट्रीम करो। शो अलोन इज इनफ। शो हैज स्ट्रीम स्टार्ट हो गया। वन मैन आर्मी। हाँ। फकिंग वन मैन आर्मी है बंदा। कितने कर रहे हैं इस वक्त? 17 किल है। मेरे पास 14 है। गिनअप किया पूरा राउंड। Contact with enemy. Already gets 17. And the match is gonna end at that moment, 150-80. We're gonna see that Rip the Dream shows alone. उर्दू में स्ट्रीम करो खत्म हो गया? हाँ, इस स्ट्रीम ESM में डाल कर आता हूँ मैं। हाँ, मैं भी ESM में डालने लगा हूँ। साथ जरा स्पैम क्या खत्म नहीं हो गया मैच? What? 3-1 नहीं है? हाँ, खत्म हो गया ना। 3-1 हो गया। I think that's the end of this match. Next Samurais versus who है? E4 करने का जा रहा है। यार मैं MP versus what? I think. ADMP कौन सा Yeah, टूर्नामेंट है I think अभी? so. मैच कौन सा है? BO5 BO1? Oh wait, 1 minute. Let me check. It's GG guys. AMP versus E4. Well played.
पे चलो फिर मैं जा रहा हूँ सोने। जी जी गाइस जी जी। उसको इनको बॉयज को ड्यूक डिस्कॉर्ड पे बुला, बंद कर दी स्ट्रीम। हाँ नहीं स्ट्रीम स्टिल मैं ऑन। एक तरह जादू नहीं चला आज, नेक्स्ट टाइम डिस्कॉर्ड पे बुला ले इन दोनों। अच्छा मैं निकल जाऊँ स्ट्रीम यहाँ से? हेलो स्ट्रीम बेशक ऑफ कर दें। मैं इधर से निकल जा रहा हूँ। चलें ओके।